Hi super achievers, students, parents and individuals. Welcome to the world of biotechnology. Today I am talking about a branch of biotechnology where you can make your career. Which is that branch? Bioinformatics. क्यों मैं बोल रहा हूँ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, मेक ए करियर इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स? क्यों? आज एक सवेरे वीडियो अचानक मेरा यूट्यूब में आया कि इट वाज टेलिंग अबाउट एआई. AI is going to replace many millions of jobs by 2030. And also they told that millions of jobs also being created by 2030. कौन सा एरिया है? They told many, like green technology, sustainability, and one of the areas they told biotechnology. क्यों? उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, ड्रग डिस्कवरी. अभी भी टाइम ले रहा है ना ड्रग डिस्कवरी. एक ड्रग मार्केट में लाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए it takes around 5 to 10 years. On critical drugs it may take longer time. But अभी AI आने के बाद it will take maximum 6 months to 1 year. It is a magic that is going to happen. And next revolutionize thing क्या होगा पता है? आपका लाइफ के बारे में आप पता कर सकते हैं. और सेल्स कैसे काम कर रहा है. Inside our body, the AI is going to take revolutionize the things through biotechnology. तो अगर इंटरेस्टेड हैं आप कैरियर बनाने के लिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए, कौन बना सकता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स से? दोज आर इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी. टेक्नोलॉजी मीन्स यू मस्ट बी इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स एज वेल एज कंप्यूटर साइंस. सो यू कैन मेक ए फैंटास्टिक करियर इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स. आज का वीडियो है आप कैसे कैरियर रोड मैप बना सकते हैं इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स. अगर आप जानना चाहते हैं those who are in starting their career and thinking of क्या कैरियर बनाऊंगा और बायोलॉजी में इंटरेस्टेड है, मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है, प्लीज स्टे विथ मी 8 से 10 मिनट. एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक ए बिग कम्युनिटी ऑफ सुपर अचीवर्स एंड यू आर वन ऑफ देम. तो आज का वीडियो में क्या क्या देखेंगे हम? फर्स्ट देखेंगे व्हाट इज बायो टेक्नोलॉजी बायो इन्फॉर्मेटिक्स. सेकेंड देखेंगे कि कैसे आप एक रोड मैप बना सकते हैं फ्रॉम स्कूल टू आपका एमएससी और पीएचडी कैसे बना सकते हैं. नेक्स्ट है आपका स्किल सेट क्या होना चाहिए, स्किल क्या क्या लेना चाहिए, लर्निंग करना चाहिए जब आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, वो भी सीखेंगे. एंड हाउ टू गेट ए जॉब, जॉब आप कैसे ढूंढेंगे और कैसे मिल सकता है आपको जॉब. बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज नथिंग बट बायोलॉजी प्लस कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स. is only data, playing with the data analysis. So this is your bioinformatics. Just imagine decoding entire human genome, genetics, just entire decoding and predicting a drug, individual drug. If I have disease, so personalized drug can be detected and can be discovered. Just imagine. And cancer disease can be cured very quickly through these innovations. And it is the backbone of biotechnology. Bioinformatics is the backbone of biotechnology. अभी देखते हैं कि कैरियर रोड मैप आप कैसे बनाएं. डेफिनेटली कौन बना सकता है? जो लोग इंटरेस्टेड है बायोलॉजी में. लाइक सपोज आप 10th क्लास के बाद क्या लेंगे? PCMB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी. देन इन योर अंडर ग्रेजुएट आप बीटेक कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में और बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में. एंड जो बीएससी किया आपने, फिर एमएससी में जब आप बायोटेक्नोलॉजी करेंगे, यू हैव टू गो फॉर एमएससी, तो उसमें एक स्पेशलाइजेशन होगा बायो इन्फॉर्मेटिक्स. अगर एमटेक करेंगे तो अगेन यू गो फॉर बायो इन्फॉर्मेटिक्स. यहाँ पर एक की पॉइंट कि आपको एक अच्छा कॉलेज से करना पड़ेगा. क्यों अच्छा कॉलेज से करना पड़ेगा? अब देखेंगे अच्छा गुड कॉलेज एंड एक एवरेज जो नौकरी मिलने का चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है एक अच्छा कॉलेज से अराउंड 80 से 85%. एंड एक एवरेज में चला जाएंगे तो इट इज़ अराउंड 30 to 40% प्रोबेबिलिटी है. ये आपको पता है क्यों? एक तो ब्रांडिंग है वहाँ पर. जो टॉप गुड कॉलेजेस उनका जो नेटवर्क अच्छा है, कैंपस होता है और उनका जो रिसर्च लैब वगैरह सब अच्छा होता है, इसलिए उनको नौकरी मिलने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है. उसका जब आप एमएससी कर लेंगे और एमटेक कर लेंगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, देन गो फॉर इंटर्नशिप. कहाँ पर इंटर्नशिप कर सकते हैं? प्राइवेट लैब्स भी है, कंपनीज है, लाइक पिक्चर है, नोवाटिस है. मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको.
You can find many companies, they are providing internship. In government हो गया, गवर्नमेंट का काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पर आप इंटर्नशिप लीजिए और ऑनलाइन भी ले सकते हैं इंटर्नशिप। एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से इंटर्नशिप के लिए, जैसे एक राचर बायोटेक, वहाँ पर आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो कुछ स्किल डेवलप करना है, कौन कौन सा स्किल हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मतलब एक प्रोफाइल बनाइए अच्छा सा लिंक्डइन, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड। योर लिंक्डइन प्रोफाइल इज योर present resume. Nobody looking, because once you apply in the company, no, they will go to LinkedIn and they will search what you are doing and what is your qualification and anything that you are publishing, lot of things. So big issue is that how to make a profile, that you can find out in YouTube videos are there. You can go and make a good profile in LinkedIn and also GitHub. Whatever any project that you are doing, small project or something during studying or building your skills, GitHub में आप उसको project को डाल सकते हैं. That is also a resume attachment. They also see what the students is doing, any project work, any innovation work, any creative projects he is doing. Let us see what skills you should develop while you are studying. जब आप study कर रहे हैं, क्या क्या skill आपका develop होना चाहिए? That is your proactive action. First है एक learn एक programming language like Python, which is required for bioinformatics or SQL. Next है data analysis tools like Power BI or Advanced Excel or Tableau. These are the softwares that you can know for data analysis. Then ML in biology and genomics tools like BLAST. It is a normal tool that you must be expert in using this tool. And soft skills like communication skills, collaboration skills and presentation skills. These skills you must develop while you are studying. Generally job roles क्या होता है? मैं थोड़ा सा रिसर्च एरिया में जाऊँगा, बायोइन्फॉर्मेटिक्स। जॉब एरिया क्या होगा? जनरली बायोइन्फॉर्मेटिक्स एनालिस्ट, बायोइन्फॉर्मेटिक्स साइंटिस्ट, कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट, रिसर्च एसोसिएट, जेनोमिक एनालिस्ट. These are the normal bioinformatics jobs in research area. See, if you want to work in an organization which is a biotechnology organization or drug organization, there are a lot of departments are there. But core area, if you want to go bioinformatics, these are the general jobs available in the market. एक example लेते हैं. You can see in my screen, no? that example. That example you can see in my screen. Just see that job is bioinformatics scientist. Just I am also having a hard copy that I am reading you. Job description is bioinformatics scientist. The company is that is Kyber Genomics Incorporation USA is a part. In India there is a subsidiary part. So this is actually USA company. So they are discovering personalized medicine. Personalized medicine that I was telling. So what is the summary of the job is bioinformatics scientist, you will be responsible for analysis and interpretation of sequenced cancer genome samples. So here the data analysis tools are required through AI, isn't it? And also Python language, programming language also required. This includes benchmarking and continuous improvement of our analysis pipelines as well as participation in downstream analysis. So just go through, you will find it. And it is full-time job as per the standards, and it is actually reporting to head clinical genomics. This is the job, about the job. Then you will see what the key responsibility. Active contribution in setting up, managing and maintaining genomic data analysis pipelines, critically evaluate, validate and implement innovative computational approaches and latest bioinformatic technologies and tools, analysis of large sequence datasets from NGS technologies, prepare reports, presentation as required, mentor in bioinformatics analysts and programmers. So it is a little bit senior person who have 5 years experience. So what is the skills?
qualification and skills. Strong knowledge of NGS data analysis, DNA sequence analysis, including variant calling. You can go through this. Proficient in programming languages, Python, Perl, R programming, various packages related to bioinformatics. Strong command over English language is essential. So these are the requirements of a bioinformatics scientist job. So how you are thinking, how you are fitting to this one, that you have to think of. That way you have to develop. Then only jobs will be available to you. This is one of the examples that I gave you. So this is all about a career roadmap in bioinformatics. And just trust yourself and put your efforts, 100% efforts, study well, develop the skills, and build a strong portfolio profile in LinkedIn, and also your project works, that whatever you are doing, programming skills in GitHub, and definitely jobs will come to you. Know that you are going for the jobs. This is all about this video. If you need any help, please send me a message. I can help you out within 48 hours. If you like this video, please share it, subscribe, hit the bell icon. All the love, all the power.